So this is the news that the real barrier to trade are no longer tariff. ठीक है. So let's start this editorial for historical perspective. ठीक है. After the end of World War II, the country's main focus was to reducing the tariff to increase the export, import, or to increase the investment between the nation. So हमारा main focus था, so that the formation of GATT, हमारा GATT का formation होता है, ठीक है, General Agreement of Tariff and Trade, then हमारा then replace करके World Trade Organization, the formation of World Trade Organization was formed. But now the situation and the scenario is very different. क्यों? Because today's our real barrier is no longer tariff only, but it is the non-tariff barrier, all the regulation, all the complex mechanism that the countries will follows even after lowering the tariff barrier. ठीक है. And the recent example of तो what is this basically non-tariff barrier? होता क्या है? Non-tariff barrier, it is the measure that restrict the trade without even imposing a direct import duties. ठीक है. क्यों import duties नहीं लगा सकते? Because World Trade Organization do not permit this. ठीक है. World Trade Organization क्या बोलती है कि आप प्रॉपर ट्रेड करो, आप ट्रेड बैरियर नहीं लगा सकते हो. ठीक है. सो ऑल द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, ऑल द सर्टिफिकेट्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड हो गया, ऑल द सर्टिफिकेट काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है. सर्टिफिकेट्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, रूल्स, टेस्टिंग. ठीक है. So our recent example of European Union carbon border adjustment mechanism. European Union extra charge on carbon related goods, especially steel related, cement related goods. So sometime, but ये भी है कि sometimes it is not negative also, because our recent example of cough syrup, ठीक है, जो एक्सपोर्ट ऑफ कफ सिरप हुआ था, इट रिजल्टेड इन डेथ ऑफ मोर देन 300 पीपल इन मेनी अदर कंट्रीज़. तो हाँ, दिस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग्स, समटाइम्स उसे भी ध्यान में रखना होता है. सो नाउ द रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन इज मैटर द मोस्ट, नॉन टैरिफ बैरियर मैटर्स द मोस्ट. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ वेरियस नेशन. ठीक है. हमने जापान के साथ कर रखा है, हमने आसियान के साथ कर रखा है, बट मार्केट एक्सेस इज रिमेन लो. वाई? बिकॉज ऑफ ऑल दीज नॉन टैरिफ बैरियर. ठीक है. नॉन टैरिफ बैरियर की वजह से इंडिया एंड आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑपरेशनल सिंस 2010 से ऑपरेशनल है. बट डिस्पाइट ऑल दीज, एक्सपोर्टर often failed because of these non-tariff barrier, because of ठीक है. Indonesia, when we take the example of Indonesia, so Indonesia pharmaceutical registration, Thailand का जो हमारा जेम्स एंड ज्वेलरीज एक्सपोर्ट है, even that sector India faced a non-tariff barrier. Similarly, काफ़ी एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, जापान का सीपा एग्रीमेंट हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट. सो डिस्पाइट ऑल द low tariff barrier, we are facing a limited market access, and the utilization of free and the utilization of trade, utilization of these free trade जो है, it is only 25%, limit up to 25% only, and the percentage of non-tariff barrier that affects the global trade, it is about 90%. ठीक है. वो 90% से अफेक्ट करा है. सो व्हाट आर द मेजर्स दैट इंडिया कैन टेक, और व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर दिस? सो one simple solution is to strengthen the domestic market. We have to focus on our domestic market, do not dependent on foreign nation, or we do not only limit ourselves to
limit ourselves to importing country only, that importing fertilizers, importing oil. We have to expand our domestic market, focus on indigenous product, and support Indian policy objective. So this is what all about this article.